वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया की टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई पैटर्न बेस्ड हैं, इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी सेशन इज बाय होम वाज द स्वराज पार्टी फॉर्मड। ये जो स्वराज पार्टी होती है किन के जरिए ये बनाई जाती हैं? द फर्स्ट ऑप्शन इज Motilal Nehru and Chitarajan Das. Second option is Subhash Chandra Bose and Sardar Patil. And the third option is Jawaharlal Nehru and Rajendra Prasad. And the fourth option is Motilal Nehru and Rajendra Prasad. The right answer of this very question is Swaraj Party was formed by Motilal Nehru and Chitarajan Das. Second question, by whom was the first image of the भारत माता पेंटेड? भारत माता की जो पेंटिंग थी, इसकी जो फर्स्ट इमेज थी, किन के जरिए ये प्रिंट की गई थी, किन के जरिए ये बनाई गई थी? वाज इट रविंद्रनाथ टैगोर, वाज इट अबिंद्रनाथ टैगोर, वाज इट रवि वर्मा और वाज इट नंदलाल बोस? द राइट आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज option B, that is Abindranath Tagore painted the first image of the Bharat Mata. Third question, why did the Indians oppose the Rowlatt Act? Rowlatt Act, which was passed in 1919 by the Imperial Legislative Council. Why did Indians oppose the Rowlatt Act? The first option is it introduced the salt law. Second option is it increased taxes on the land. Third option is it gave the British the power to arrest and detain a person without a trial. And the fourth option is it put a ban on the Congress party. So we have already studied about the Rowlatt Act. It gave the British power to arrest and detain a person without a trial for 2 years. So option C is the right answer. Question number 4, why did Gandhiji organize a satyagraha in Ahmedabad mill in 1918? ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ऑफ 1918। तो यहाँ पर जो ये मिल स्ट्राइक हुई थी, गांधी जी के जरिए सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, क्योंकि टू डिमांड हायर वेजेस फॉर द वर्कर्स, वर्कर्स के लिए हायर वेजेस को डिमांड करना, यही मेन ऑब्जेक्टिव था गांधी जी के जरिए ये जो सत्याग्रह यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। द Question number 5. What kind of movement was launched by the tribal peasants of Guidam Hills of Andhra Pradesh? जो ट्राइबल peasants थे आंध्र प्रदेश की, इनके जरिए कौन सी मूवमेंट लॉन्च की जाती है? क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट was launched by the tribal peasants of Guidam Hills in Andhra Pradesh. Question number 6. हिंद स्वराज वॉज रिटन बाई, हिंद स्वराज ये जो बुक थी ये किन के जरिए लिखी गई थी? ऑप्शन ए इज अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी इज महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार पाटिल एंड द ऑप्शन डी इज सुभाष चंद्र बोस। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज हिंद स्वराज वॉज रिटन बाई महात्मा गांधी। Question number 7. Which among the following was the prime factor in the emergence of modern nationalism in India? So, nationalism emerged in many states with different other objectives. And what was the prime factor in India which led to the emergence of nationalism in India? So, we have already studied about it. So, anti-colonial movement was the prime factor which led to the emergence of modern nationalism in India. So, option D is the right answer of question number 7. Question number 8. In which year did Gandhi ji return to India from South Africa? गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब लौट आते हैं? तो द राइट आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन जनवरी 1915. Question number 9. Champaran Satyagraha of 1916 was launched by Gandhiji against. Option is high revenue demand. Option B, indigo planters. Option C, mill owners. And option D is salt tax. The right answer of this very question is Champaran struggle of 1916 was launched by Gandhiji against indigo planters. So option B is the right answer of question 9. Question number 10. In which city Jallianwala Bagh massacre or tragedy took place? So Jallianwala Bagh massacre or Jallianwala Bagh tragedy took place on 13th of April 1919 in the city of Amritsar. So Amritsar में जो Jallianwala Bagh massacre था ये witness किया गया था। तो right answer is option A. Question number 11. Which of the following formed the खिलाफत कमेटी in Bombay? खिलाफत कमेटी की जो फॉर्मेशन थी बम्बई में किन के जरिए हुई थी? तो the right answer of this very question is Ali brothers. Muhammad Ali and Shaukat Ali were the key players in the formation of the खिलाफत कमेटी in Bombay.
क्वेश्चन नंबर 12, द फेमस बुक ऑफ गांधी जी इज, फेमस बुक गांधी जी की इनमें से कौन सी है? तो द राइट आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज द फेमस बुक ऑफ गांधी जी। Question number 13. When did Mahatma Gandhi return India from South Africa? Question is repeated. So the right answer also we have studied about it is 1915. 1915 में जो महात्मा गांधी हैं साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ जाते हैं। Question number 14. What did Mahatma Gandhi in his book Hind Swaraj declare? हिंद स्वराज में महात्मा गांधी के जरिए एक मैसेज दी गई थी and what was that message? The right answer of this very question is British rule in India survived because Indians cooperated with them. British rule India में अगर survive कर पाया है it was because of Indians cooperation। और ये भी यहाँ पर कहा गया था गांधी जी के जरिए if Indians would not cooperate with ब्रिटिश रूल विल कम टू एन एंड। सो ये स्वराज में मैसेज दी गई थी, तो ये हिंद स्वराज में मैसेज दी गई थी गांधी जी के जरिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, हु लेड द पीजेंट्स इन अवध? अवध में पीजेंट मूवमेंट किन के जरिए चलाई गई थी? द राइट आंसर इज बाबा रामचंद्र लेड द पीजेंट मूवमेंट इन अवध। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम? प्लांटेशन वर्कर्स का क्या इफेक्ट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के चलते हुए आसाम में? दे left the plantations and headed towards home. It is the right answer. They left the plantations and headed towards home during the non-cooperation movement. Question number 17. What was the main problem with the Simon Commission? Simon Commission was appointed by the colonial rule in 1927. It reached India in 1928, and the main objective of this very commission was to investigate how the good governance and how the responsible government could be established in the India. And the options are: it was all British Commission, it was formed in Britain, it was set up in response to nationalist movement, all of the above. The right answer of this very question is all of the above because it was a British commission, it was formed in Britain, and it was set up in response to national movement. So the option D is the right answer. All of the above options are true. Question number 18. Where was the Gandhi's ashram located? Gandhi's ashram was located in Sabarmati, that is in Gujarat. Question number 19. What led to the civil disobedience movement? Civil disobedience movement की जो शुरुआत थी किस तरह से की जाती है? So violation of the salt tax by Gandhi. गांधी जी के जरिए जो salt law था उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और salt को प्रिपेयर किया जाता है। In this way Gandhi violated the salt tax and in this way started the civil disobedience movement. Question number 20. Who organized the Dalits into the Depressed Classes Association? ये जो मूवमेंट थी 1930 में बनाई गई थी बी आर अम्बेडकर के जरिए, जो कि डिप्रेस्ड क्लासेस थे इनको अंडर द सिंगल बैनर में लाने के लिए। 21. What moved Abhindranath Tagore to paint the famous image of the Bharat Mata? So the right answer of this very question is Swadeshi movement moved Abhindranath Tagore to paint the famous image of the Bharat Mata. Question number 22. Who wrote the Vande Mataram national song of India? किनके जरिए लिखा गया है? The right answer of this very question is बिंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय जो है इनके जरिए ही ये जो वंदे मातरम का सॉन्ग था ये लिखा गया है। Question number 23. Who was Sir Muhammad Iqbal? Sir Muhammad Iqbal was the president of the Muslim League during 1930. Sir Muhammad Iqbal was the president of the Muslim League during 1930. Question number 24. Federation of Indian Commerce and Industries was formed by whom? Federation of Indian Commerce and Industries was formed by Indian merchants. So option C is the right answer. Question number 25. Militant Guerrilla movement spread in Gudim Hills of Andhra Pradesh. So militant guerrilla movement spread by the tribals of Gudim Hills of Andhra Pradesh. So this was all in this today's video section chapter Nationalism in India. Hope you all have enjoyed it. This was all in this today's video lecture. We will be back in the next video lecture. Till then, stay blessed. Allah Hafiz. Afi Amanillah.